학교는 지금 야, 어디야? Ladies and gentlemen,
The Honorable President of India and Supreme Commander of the Defence Forces has embarked INS Sumedha. Shortly, the presidential yacht shall cast off. देवियों और सज्जनों, भारत की माननीय राष्ट्रपति और सुरक्षा बलों की सर्वोच्च कमांडर आईएनएस सुमेधा पर पधार चुकी हैं। अब से कुछ ही क्षणों में राष्ट्रपति का जहाज प्रस्थान करेगा। Ladies and gentlemen, shortly the Honorable President of India shall receive a Rashtriya salute from the Guard of Honor, followed by a 21-gun salute. All guests are requested to rise. देवियों और सज्जनों, भारत के माननीय राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Now, as the fleet sails in review today, it also narrates the story of Atmanirbharta, with a significant number of frontline platforms built in Indian shipyards. Let's go back into a history a bit. Indian Navy started its self-reliance in 1950s by designing and constructing its own ships at GRSE. INS Ajay holds the distinction of being the first warship to be indigenously built in India. Constructed at the Garden Reach Workshop in Calcutta, now known as the Garden Shipyards, Shipbuilders and Engineers Limited. India's long journey towards indigenization and indigenous shipbuilding traces its origins to pre-independence era.
This pioneering shipyard, which has made several ships for India, today is known as the Hindustan Shipyard Limited. Following independence, the government of India acquired 2/3 of the company's holdings and formally incorporating Hindustan Shipyard Limited on 21st January that year. In view of the nation's ever-evolving strategic requirements, the shipyard was later brought under the administrative control of the Ministry of Defence in Feb 2010, further strengthening its role in India's maritime security architecture. Over the decades, Hindustan Shipyard Limited has built more than 200 vessels and undertaken refits of over 2,000 ships of various categories. Significantly, it remains the only shipyard in India to have refitted 3 different classes of submarines, including the Egyptian Navy submarines, the Foxtrot class submarine INS Waghli, and the EKM class submarines INS Sindhu Kirti and INS Sindhuveer of the Indian Navy. We were also talking about how India's rise as the shipbuilding nation is rooted in legacy that began even before independence. India's journey towards indigenous shipbuilding traces its origins to the pre-independence era, and as we were mentioning to you about the Hindustan Shipyard Limited, we now have the visuals inside from INS Sumedha of the Hindustan Shipyards Limited. जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अब तक 200 से ज़्यादा वेसल बना चुका है, और साथ ही रीफिट की बात जब हम करते हैं तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 2000 से भी अधिक वेरियस कैटेगरीज के वेसल्स की रीफिट वो कर चुका है। साथ ही हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एकमात्र ऐसा शिपयार्ड है जिसमें 3 अलग अलग क्लासेस के सबमरीन्स की रीफिटिंग की है। यहाँ पर ये सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि इजिप्शियन नेवी सबमरीन्स के भी, फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन्स के भी रीफिटिंग कर चुका है। साथ ही ईकेएम क्लास सबमरीन्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आईएनएस सिंधु कीर्ति, आईएनएस सिंधुवीर इंडियन नेवी के वो भी यहाँ पर रीफिटिंग हो चुके हैं। जैसे जैसे आईएनएस सुमेधा समुद्र की ओर बढ़ रही है, पोर्ट छोड़ रही है, हमें कई सारे यहाँ पर विशाखापट्टनम के इंटरेस्टिंग और जो बहुत ज़्यादा आकर्षण वाले केंद्र हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आप देखें तो अभी हमें जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है रॉस हिल पोर्ट सिग्नल स्टेशन है, और पोर्ट सिग्नल स्टेशन से ही जुड़ा हुआ ये रॉस हिल जिसके बारे में हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं यहाँ की, लेकिन जो ये पोर्ट सिग्नल स्टेशन है वो यहाँ पर जो भी वेसल्स अंदर आने हैं पोर्ट में उन्हें एक तरीके से नेविगेट करता है और उन्हें फैसिलिटेट करता है कि कौन पोर्ट में किस समय में आ सकता है। These are very spectacular visuals, and we have M. Durai Babu with us. Sir, as we were talking about earlier, we were talking about the importance and the significance of this particular naval dockyard, how it is naturally blessed. We also explained how the Hindustan Shipyard Limited has been instrumental. How do you see this particular
journey of indigenization and today where we stand? See, the Navy is a very technology-reliant force with state-of-art weapons, sensors, propulsion and power generation systems. And technology is an ever-growing facet. हर बार change होता रहता है. The armed forces and also the nation has to be self-reliant, Atmanirbhar, Right. for the country to grow and the forces to make sure we are not dependent on somebody else during times of crisis. The Indian Navy, as you said, has been self-reliant since the 50s. First warship built in India was a small seaward defense boat, INS Ajay. Okay. It was a small start and today we are where we are. The Navy established a warship design bureau to design and manufacture various components that go into shipbuilding. The first milestone was achieved when we commissioned the earlier avatar of INS Nilgiri in 1976. Okay. India's first designed and constructed warship in Okay. Musgon docks. Yeah. So we were explaining to our viewers about the Ross Hill and the attractions in Visakhapatnam. So Ross Hill is a very interesting place over here, and as we are seeing right now, we are seeing the Venkateshwara temple over here. What we are also seeing is behind the Venkateshwara temple is also the Ross Hill Church. Alongside in another place, another top, we will also see Baba Ishaq's Dargah over there. So we can say that this is a place where inclusivity is majorly signified. So I'll just explain how Ross Hill stands as the unique symbol of India's enduring spirit of religious harmony. This scenic hill complex offers breathtaking panoramic views of the harbour and also of the vast Bay of Bengal. It draws visitors seeking both serenity and natural beauty. So now we are also seeing International Cruise Terminal in our side. Sir, this time around International Cruise Terminal has been, very instrumental for IFARC, right? That's right. The International Cruise Terminal, which is part of the Visakhapatnam Port Trust, is also being used as a landing point for all the ships which are at anchorage. So as I said, there are about 70 odd ships which are there. Yeah. And they are all coming and landing here and being welcomed here for proceeding to various events. So we are talking about international vessels as well. How many are there? And since this is a mega event, 71 ships we are saying in total, how many of the international fleets ships are here? So we have about 19 warships from friendly foreign countries which have come and are participating in the International Fleet Review. Okay. So while we've already seen these visuals, we will now get our viewers another compelling audiovisual presentation which will showcase the strength, spirit and service of the Indian Navy. Conquering the seas. Shaping the future for my country. Rising to quell the unforeseen. I am. Combat ready. Credible. Cohesive. And a future-proof force. A great day has dawned. One that will go down in history. For I have taken great strides towards becoming Atmanirbhar, self-reliant.
I achieved an unprecedented milestone with the commissioning of India's first indigenous aircraft carrier. Designed by the Warship Design Bureau. Constructed at the Cochin Shipyard Limited. And named after her most illustrious predecessor, INS Vikrant, the hero of the 1971 war. The INS Vikrant proudly unfurled the new naval ensign, signaling the Indian Navy's break with its colonial legacy. My Blue Water Navy credentials are significantly enhanced with the reborn INS Vikrant, adding mobility, Force projection, and multi-dimensional capability to my quiver. a watershed that completes my transformation from a buyer's to a builder's navy. My journey as a builder's navy has been part sprint, part marathon so far. The first step was INS Nilgiri. Now the pace of my growing fleet has increased. More than 130 ships, submarines, (240 aircraft), maintaining a credible defense to ward off hostile misadventures. 45 ships and submarines are at various stages of construction. Indigenization has increased to 75%. And reinvestments in the economy now amount to 60%. Preceding the INS Vikrant, indigenous teams launched the stealth frigate Dunagiri. The ship has advanced weapons, sensors, and platform management systems. With Surat, the future-ready indigenous guided missile destroyer, which enables enhanced force projection. And Udaigiri, India's second indigenous stealth frigate, is amongst the most technologically advanced missile platforms in the world. And also Vagshir, the 6th Kalvari-class submarine, adding stealth to my steel, enhancing my self-reliance. I also commissioned 3 aircraft squadrons. The INAS 324 Kestrels, the first advanced light helicopter squadron on the eastern seaboard. The INAS 325 Advanced Light Helicopters Squadron will serve the Navy in the Andaman and Nicobar Islands. And the INAS 316, the Condors of the mighty versatile P-8I, one of the most potent long-range maritime reconnaissance platforms in today's world. Swavalamban, the maiden seminar by Naval Innovation and Indigenization Organization, fostered a new chapter in self-reliance. Atmanirbharta is also about investing in the nation's talent. Something I've always been in the forefront of. My sailors find their sea legs at INS Chilka.
preparing them all for a life serving the nation. My officers continue to train at the Indian Naval Academy, Erzimala. Where they gain a technical and soldier's education from the very best. I now invite both men and women to join me as Agniveers. Learning the skills that will last a lifetime. I am a pioneer of Nari Shakti. Women now serve as pilots, air operations officers in the helicopter stream. A crew of 2 women officers is undertaking an expedition to Rio de Janeiro via Cape Town, South Africa. An all-woman air crew completed a historic independent surveillance mission. Women are now increasingly assigned to combat roles. The greater का प्रदर्शन है. What you see now INS on your Sumedha left has now is the reached to the magnificent starting point of the International Fleet Review. We will now see the starting of this. three-masted bark. She has 20 sails, which together provide nearly 10,000 square feet of area to catch the wind. You can see her smart cadets manning the 3 masts and waving, while their gaze remains firm on the horizon and beyond. देवियों और सज्जनों, तरंगिणी ने दुनिया भर में कई टॉल शिप स्पर्धाएं जीती हैं और कैडेट्स को साहसी ऑफिसर्स में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस पोत को 1997 में कमीशन किया गया था. आप इसके चुस्त कैडेट्स को तीनों मास्ट पर तैनात हाथ हिलाकर अभिवादन करता हुआ देख सकते हैं, जबकि उनकी दृष्टि क्षितिज के पार टिकी है. Now on your left is INS Gaj, commanded by Lieutenant Commander Mukul Magotra. Gaj is an ocean-going tug built here at the Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam. She is the first and only ship of her class in the Indian Navy and employs a Voigt-Schneider propulsion, allowing her to turn 360 degrees on the spot. INS Gaj तोप खाने के अभ्यास के लिए लक्ष्यों को खींचने, गोला बारूद डंप करने, कॉन्सर्ट ड्यूटी, परीक्षण, गश्त और फायरिंग रेंज की सफाई करने जैसे कार्य को बखूबी अंजाम देता है. गज का युद्ध घोष है, जिसने रखा ध्वज का मान, गज महान, गज महान. Coming up next, on your right, is the lead ship of the shallow water anti-submarine warfare craft INS Arnala, commanded by Commander Ankit Grover. INS अर्नाला का आदर्श वाक्य है, अर्णवे शौर्यम, अर्थात समुद्र में शूरता.
यह हल माउंटेड और वेरिएबल डेप्थ सोनार हल्के वजन के टॉर्पीडो एचडब्ल्यू रॉकेट से सुसज्जित है। Coming up on your left with pennant number Alpha 61 is a catamaran-hulled torpedo launch and recovery vessel, Indian naval ship Astradharini, presently commanded by Lieutenant Commander Anurag Daima. आईएनएस अस्त्रधारिणी को नौसेना विज्ञान तकनीकी प्रयोगशाला एनएसटीएल गुजरात के शॉफ्ट शिपयार्ड और आईआईटी खड़गपुर ने संयुक्त रूप से डिजाइन किया है। You can see towards your right another shallow water craft, INS Androt, commanded by Commander Guru Prasad Patil. Yet another catamaran-hulled vessel that you see on your left is INS Makar, presently commanded by Commander Madhusudana Rao Maradana. Makar is the first and only hydrographic vessel of its kind inducted into the Indian Navy. आईएनएस मकर आधुनिक हाइड्रोग्राफिक और महासागरीय सर्वेक्षण प्रणालियों से सक्षम है। Coming up on your right-hand side is a sleek missile corvette INS Kirch, commanded by Commander Advait Sarin. The ship proudly sails under the motto Sword to Victory, embodying its lethal capability and swift response doctrine. लगभग 130 नौसैनिकों से तैनात आईएनएस किर्च अपनी एंटी शिप क्षमताओं के लिए जाना जाता है। What you see now on your left is INLCU 56. Commissioned in 2019, she is commanded by Lieutenant Commander Abhinash Patra. आईएनएस एलसीयू 56 का युद्ध घोष है समुद्र हो या सतह 56 करे फतेह। The ship with pennant number Papa 47 that you see on your right is a Kukri-class missile corvette INS Khanjar. She's presently commanded by Commander Ronnie Chopu, the first officer from Arunachal Pradesh to command a warship. खंजर का यह नाम भारत के प्राचीन हथियारों से प्रेरित है और यह जहाज एक खंजर की तरह ही सटीक एवं त्वरित वार करने की क्षमता रखता है। She is affiliated with both Indian Army and Indian Air Force units. The ship that you see now on your left is INLCU 55, commanded by Lieutenant Commander Harsukh Dadich.
LCU 55 का युद्ध घोष है, करने को प्रहार 55 सदैव तैयार। The White Hull ship on your right-hand side is a Samad class offshore patrol vessel ICGS Sujay, commanded by DIG Davis John Manoj. Today, she is flying the flag of Additional Director General Donnie Michael, Ati Vishisht Seva Medal, President's Tadrakshak Medal, Coast Guard Commander, Eastern Seaboard. On your left is Indian naval ship Tarmugli, commanded by Lieutenant Commander Gaganjeet Mahajani. This fast attack craft is a crucial asset in safeguarding India's island territories and exclusive economic zone. यह जहाज भारत के द्वीपीय क्षेत्रों की सुरक्षा, रणनीतिक जलमार्गों की पेट्रोलिंग और देश के तटीय और समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। On your right-hand side is ICGS Sarathi, commanded by Commandant Kundan Singh. ICGS सारथी का नारा है, हार नहीं मानती सारथी सारथी। लगभग 3,000 टन के विस्थापन और 23 नॉट्स की गति वाले यह आधुनिक ऑफशोर पेट्रोल वेसल समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारतीय तटरक्षक बल की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। On your left is Indian naval ship Baratang, pennant number Tango 68, commanded by Lieutenant Commander Aditya Kumar. INS बाराटांग सागरीय तट पर निगरानी, EEZ की सुरक्षा, तस्करी और शिकार रोकथाम तथा आतंकवादी रोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। Next on your right is Indian Coast Guard ship Veera, commanded by Commandant Nauram Fanindro Singh. Commissioned in 2019, she's the third in a series of 7 next-generation offshore patrol vessels built by L&T Shipbuilding in India. ICGS वीरा के आदर्श वाक्य हैं, सतेषु जयते वीरा, अर्थात सत्य और धर्म के साथ खड़ा वीर ही विजयी होता है। On your left is another fast attack craft, Indian naval ship Cherium, commanded by Lieutenant Commander Tula Umesh Kumar. चेरियम वर्ग के जहाजों के नाम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दूर दराज द्वीपों के नाम पर रखे गए हैं।
On your right-hand side is Sri Lankan naval ship Nandi Mitra, a fast missile vessel of the Sri Lanka Navy commanded by Captain KVSL De Silva. It won't be a surprise to find officers and sailors on board this mighty warship who were trained in India, be it the Naval Academy or the professional schools in Kochi. श्रीलंका का अपने देश की सुरक्षा में साझा योगदान दे रहा है। Coming up on the left with pennant number Papa 609 is Seychellois Coast Guard ship Zoroaster, commanded by Captain Lyndon Leblanche. SCGS Zoroaster is a fast patrol vessel from Seychelles, based on India's Rajshri class inshore patrol vessel design, and was built by GRSE Kolkata. Handed over by India in 2021, she is optimized for anti-smuggling, fisheries protection, search and rescue, and EEZ patrol duties. भारत द्वारा सौंपा गया यह जहाज दो देशों की मित्रता का एक साझा उदाहरण है। The Sri Lankan Navy ship Saugara is what you see next on your right. She is commanded by Captain WNSB Dharmaratna and is tasked with long-range surveillance, escort and general maritime security duties in the Indian Ocean region. बेहतरीन एंड्योरेंस, एक उड़ान डेक और आधुनिक नेविगेशन एवं संचार प्रणालियों से लैस यह जहाज खोज एवं बचाव और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ संयुक्त गश्त जैसे शांति व्यवस्था मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। The ship that you see on your left is Maldivian Coast Guard ship Huravi, commanded by Lieutenant Colonel Ahmed Nafiu Mohammed. मालदीव तटरक्षक बल का यह गश्ती पोत है, जिसे मूल रूप से भारत में ट्रिंकट श्रेणी के गश्ती जहाज आईएनएस तेलंगचांग के रूप में बनाया गया था और यह दोनों देशों के उम्दा संबंधों का एक प्रतीक भी है। She performs EEZ patrol, anti-smuggling, anti-piracy, and search and rescue missions, and is optimized for coastal security in the Maldivian littorals. From the largest archipelagic state, Indonesia, we have Kapal Perang Republic, Indonesia, Bung Tomo on your right, commanded by Captain Rianto Aegis Wibowo. She was commissioned into the Indian Indonesian Navy in 2014. As a multi-role light frigate, the ship has potent surface, air defense and anti-submarine capabilities. इंडोनेशिया का यह जहाज अपनी विविध भूमिकाओं के लिए जल, थल और आकाश में सक्षम आधुनिक हथियारों से लैस है। The vessel on your left is Royal Navy of Oman vessel Saad from Oman, commanded by Lieutenant Commander Shaheen Al-Balushi. The presence of this fine warship from Oman here in India at a time when India's ancient stitch ship INSV Kondenia just completed her maiden historic voyage to Oman conveys the long-standing relationship that both nations enjoy. यह जहाज EEZ गश्त, निगरानी और समुद्री सुरक्षा अभियानों की काबिलियत रखता है। With pennant number 551, the offshore patrol vessel on your right is His Thai Majesty यह विशेष रूप से थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर में EEZ की गश्त, मत्स्य पालन संरक्षण और समुद्री सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है।
An offshore patrol vessel of the Royal Thai Navy, she is optimized for EEZ patrol, fisheries protection, and maritime security in the Gulf of Thailand and Andaman Sea. She is also capable of carrying an AW-139 class helicopter. Coming up with pennant number 75 on your right-hand side is the Islamic Republic of Iran ship Dana, commanded by Commander Abuzar Zareh. She's a Moj-class frigate of the Islamic Republic of Iran Navy, commissioned in June 2021 and named after the iconic Mount Dana. इस जहाज के हथियार इसे हवाई हमले, सतह पर युद्ध और सीमित पनडुब्बी रोधी युद्ध में एक बहुआयामी क्षमता प्रदान करते हैं। यह जहाज दोनों देशों की नौसेनाओं का एक साझा उदाहरण है। An interesting fact regarding the name of IRIS Dana. She is named after the iconic Mount Dana, also called the Kuh-e-Dinar. With that, ladies and gentlemen, we come to the end of the first leg, during which 2 columns of anchored vessels were reviewed by the President of India. देवियों और सज्जनों, इसी के साथ प्रथम चरण का रिव्यू खत्म हुआ। As you would have noticed, in the case of Indian warships, every name tells a story of geography, history, valor, or seaborne purpose. And for those aboard these proud vessels, that name, the crest, the motto, and the war cry becomes both a banner and a mission statement. भारतीय नौसेना का हर जहाज की एक नाम की एक कहानी है। भूगोल, इतिहास, वीरता या समुद्री उद्देश्य की, और उन लोगों के लिए जो इन गर्वित जहाजों पर सवार हैं। वह नाम, वह क्रस्ट, वह आदर्श वाक्य और युद्ध घोष एक पहचान और एक मकसद दोनों बन जाते हैं। We now request our guests to look ahead. You would notice a large number of colorful sails on the horizon. Sail training is not merely an ode to the earliest form of wind power, but also an essential skill that enhances the understanding of how the forces of nature act on a vessel. अब हम अपने मेहमानों से अनुरोध करते हैं कि वे जहाज के सामने बाईं ओर देखें। आपको क्षितिज पर बड़ी संख्या में रंगीन पाल दिखाई देंगे। सेल ट्रेनिंग न केवल प्रणोदन के सबसे शुरुआती रूप पवन शक्ति के प्रति एक सम्मान है, बल्कि यह एक आवश्यक कौशल भी है, जो यह समझने में मदद करता है कि प्रकृति की शक्तियां नौकाओं पर किस प्रकार कार्य करती हैं। On the port side, ladies and gentlemen, is the parade of sails. The first 2 vessels are INSV Mahade, skippered by Lieutenant Commander Dilna K. Shaurya Chakra, and INSV Tarini, skippered by Lieutenant Commander Rupa A. Shaurya Chakra. These vessels and their skippers have achieved what very few on the planet ever have. They circumnavigated the globe, over 36,000 nautical miles, carrying the Indian tricolor across continents, oceans, storms, and ice-cold winds. देवियों और सज्जनों, बाईं ओर आप देख रहे हैं परेड ऑफ सेल। पहली 2 नौकाएं आईएनएसवी मादई, जिन्हें लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के शौर्य चक्रा संचालित कर रही हैं, और आईएनएसवी तारिणी, जिनकी स्कीपर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए शौर्य चक्रा। गौर करने की बात है कि इन दोनों नौकाओं और स्किपर्स ने विश्व परिक्रमा की हुई है, और ये नारी शक्ति का सशक्त प्रतिनिधित्व करती हैं,
और भारतीय नौसेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है। INSV Neelkanth, skippered by Lieutenant Ankit, is proudly hoisting the Indian tricolour sail, signifying command, control, and India's sovereign presence at sea. Following in line are INSV Kadalpura, skippered by Commander T.S. Bisht, and INSV Haryal, skippered by Lieutenant Commander Ravindra Yadav. Following them are professional yachtsmen led by Lieutenant Commander P.R. Patil in fast, small sailing craft, along with NCC and SCC cadets and naval sailors proudly carrying tricolour sails, reflecting the seamless integration of experience, training, and youth within India's maritime ecosystem, and one unique way of contributing to nation building by moulding India's younger generation. इसके बाद तेज और छोटे नौकायन यानों में प्रोफेशनल यॉट्समैन हैं, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर पीआर पाटिल कर रहे हैं। उनके साथ एनसीसी और एससीसी कैडेट्स तथा नौसैनिक भी हैं, जो गर्व से तिरंगा सेल लेकर चल रहे हैं। यह As you may have experienced by now, the Indian Navy is truly unique, where technology intermingles with the old world charm of ancient seafaring law and custom. Little wonder that nuclear propulsion blends so well with the whaler under oars, the global positioning system with the star sight, the sounding chains bellowing in unison with the echo sounder. A warship at sea is the only fighting unit in constant proximity of the national flag, with ceremonies and emotions that are evoked by the national colours, inspiring every maneuver at sea. In a short while from now, the third and fourth columns of the review would be undertaken. This would be the second leg for the presidential column. अब से कुछ ही समय में राष्ट्रपति की टुकड़ी द्वारा तीसरे और चौथे कॉलम की समीक्षा की जाएगी। यह राष्ट्रपति के काफिले के लिए इस समीक्षा का दूसरा चरण होगा। The next warship that you see on your left is the Republic of Korea ship Gangnam-chan, commanded by Captain Yoon Hyuk Min. She is a Chunmugong Yi Sun-shin class multi-role destroyer of the Republic of Korea Navy. कोरिया के जाने माने सेनापति के नाम से मशहूर ये जहाज एक मल्टी रोल डिस्ट्रॉयर है। As a key blue water asset, she has demonstrated advanced air defense and anti-piracy capabilities during distant deployments, including operations in the Gulf of Aden and major multinational exercises. Coming up next on your right-hand side is His Majesty's Australian ship Warramunga, commanded by Commander Ken Brown. She's an Anzac-class multi-role helicopter frigate of the Royal Australian Navy. ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों वारामुंगा के नाम पर आधारित यह जहाज एक मल्टी रोल फ्रिगेट है। The next warship that you see on your left is Japanese ship Yudachi, a Murasame-class destroyer of the Japan Maritime Self-Defense Force. She is commanded by Commander Tsutsumi Toshio. She is designed for multi-mission escort and is operated by the Escort Flotilla in the Indo-Pacific. जापानी जहाज युदाची बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यासों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा में पनडुब्बी रोधी और बेड़े की हवाई रक्षा भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से सक्षम है।
From our eastern neighbor, Myanmar, we have Union of Myanmar ship King Ong Zea on your right-hand side. She is commanded by Commander Ye Win Thaw. म्यांमार का यह युद्धपोत अपनी क्लास का मुख्य जहाज है और एक मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के रूप में काम करता है. She is Myanmar's first indigenous guided missile frigate and the sole unit of the Ong Zea class, providing blue water capability. Displacing roughly 2,500 tons, her impressive array of weapons and sensors give her a genuinely multi-role profile in air, surface and subsurface warfare. Coming up next on your right is Vietnam People. The next ship on your left is the ship of the Republic of Philippines, Miguel Malvar. She is commanded by Captain Paul Michael Heshenova. फिलीपींस नौसेना का यह जहाज उन्नत सेंसर, वर्टिकल लॉन्च हवाई रक्षा मिसाइलों और मजबूत एंटी सरफेस एवं पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणालियों के साथ नौसेना की तटीय युद्ध क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है. A modern guided missile frigate and the lead ship of her class, Miguel Malvar was commissioned in May 2025. Next up on your right is Vietnam People's Navy ship 17 of Brigade 171. It's a Petya class light frigate commanded by Commander Le Viet Nghi. The senior officer present on board is Senior Captain Le Din Nghi. वियतनाम का यह युद्धपोत बहुआयामी क्षमताओं से लैस है और वियतनाम के सागरीय हितों की रक्षा करने में सक्षम है. Ladies and gentlemen, cherish the unique salutations of the Vietnamese that sea warriors accord the Supreme Commander. Coming up on your left is SCI Saraswati, commanded by Captain A.S. Prabhakar. She is a modern, multi-purpose offshore support vessel owned by the Shipping Corporation of India. On your right-hand side is INS Airavat, commanded by Commander Ishwar Lal P. Patil. The ship contributed immensely during COVID-19 by carrying vaccines and aid to various countries of the Indo-Pacific. यह स्वदेशी निर्मित एक जल थल युद्धपोत है जिसे बड़े पैमाने पर लैंडिंग ऑपरेशन, रसद और मानवीय मिशनों में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है. Coming up on your left is Sagar Anveshika, commanded by Captain Tille C. Shivashankar. It is a research vessel operated by the National Institute of Ocean Technology under the Ministry of Earth Sciences, Government of India. यह भारत के समुद्री क्षेत्रों में वैज्ञानिक मिशनों में हिस्सा लेती है. इसमें आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों के साथ जहाज पर प्रयोगशालाएं भी हैं जो समुद्री अनुसंधान में सहायता करती हैं. This ship is used for coastal and offshore oceanographic research, including bathymetric surveys, environmental monitoring, and collection of ocean and atmospheric data. On our right-hand side is INS Shardul, commanded by Commander Sumit Kumar Singh. शार्दुल वर्तमान में फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा है
और कैडेट्स को प्रशिक्षण देने में अपनी भूमिका निभा रहा है। Her motto is all of one, one for all, befitting of ship that imparts training to budding leaders. Coming up on your left is INS Jamuna, commanded by Commander Devendra Singh. She has been deployed extensively to the Indian Ocean island nations for survey activities. भारतीय नौसेना पोत जमुना का उपयोग हाइड्रोग्राफिक और समुद्री विज्ञान सर्वेक्षणों, नौ संचालन, चार्टिंग और सुरक्षित समुद्री संचालन के लिए किया जाता है। जब आवश्यकता हो तब यह HADR कार्यों के लिए भी सक्षम है। Jamuna is employed in hydrographic and oceanographic surveys. The next ship on your right-hand side is the third LST of the Indian Navy present in this review, INS Ghadial, commanded by Commander Gaurav Tiwari. She's the only Indian warship where a girl child was born on board during evacuation post in the 2004 tsunami. यह जहाज सैन्य दलों, टैंकों और आर्म्ड व्हीकल्स को जल थल आक्रमणों और युद्धाभ्यासों के समय सफलतापूर्वक ले जाने में सक्षम है। On your left, coming up next, is Indian naval ship Darshak, commanded by Commander Amit Kumar Padha. The ship played pivotal role in charting the waters in the Andamans post the 2004 tsunami. INS दर्शक भारत के समुद्री अनुसंधान और नौवहन सुरक्षा को बढ़ाने के अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखे हुए है। Next up, on your right-hand side, is Indian naval ship Sujata with pennant number Papa 56, presently commanded by Commander Jishnu Madhavan. अगला जहाज भारतीय नौसेना युद्धपोत सुजाता है। यह जहाज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन से जुड़ा है और कैडेट्स को प्रशिक्षण प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। On your left, coming up next, is Indian naval ship Sarvekshak, commanded by Captain Kishore Air. She has been awarded the coveted unit citation in the present cycle, that is 2025-26. She is a hydrographic survey vessel that can operate for long durations independently whilst carrying out detailed mapping of the seas.
Indian naval ship Tir with pennant number Alpha 86, commanded by Captain Tijo K. Joseph, is the next ship on your right-hand side. आईएनएस तीर का आदर्श वाक्य है, नाम नमक निशान पर, तीर सदा मुकाम पर। On your left is Indian naval ship Nirdeshak, commanded by Captain Ajay Chauhan. यह आधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरणों जैसे मल्टी बीम इको साउंडर, डिजिटल साइड स्कैन सोनार, ऑटोनोमस जलयान और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से लैस है। You can see towards your right the fourth ship of Kamorta class ASW corvettes, Indian naval ship Kavarati, commanded by Commander Ashwini Kumar Bura. आईएनएस कवरती भारतीय स्टील और मिश्रित सुपरस्ट्रक्चर के अनूठे कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। She stands out for her stealth features that suppress radar, thermal and acoustic signatures. On your left is Indian naval ship Sandhayak, commanded by Captain Natua Dheeraj. INS Sandhayak, built by Garden Reach shipbuilders and engineers, is the lead ship of her class of survey ships. देवियों और सज्जनों, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 के नेविगेशनल चार्ट का निर्माण आईएनएस संधायक ने किया है। The next ship coming up on your right is Indian naval ship Kiltan with pennant number Papa 30, commanded by Commander Alok Gaurav. यह कमोरता श्रेणी के पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट का तीसरा जहाज है जो उन्नत सोनार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों, टॉर्पीडो, एचडब्ल्यू रॉकेट, तोपों और क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस है। Coming up on your left is Indian naval ship Ikshak, commanded by Captain Tribhuvan Singh. इक्षक नाम का अर्थ है मार्गदर्शक और इसे समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाने और संसाधनों की खोज के लिए तटीय और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने के लिए डिजाइन किया गया है। We are now approaching Indian naval ship Kamorta, pennant number Papa 28 on your right-hand side, commanded by Commander Swapnil Srivastav. मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण यह जहाज 90% आत्मनिर्भर है। इसका आदर्श वाक्य है, शत्रुनाम संघातकः, अर्थात शत्रु का संहार करने वाला।
The last ship on this leg coming up on your right is yet another unique ship in Indian Navy's inventory. Indian naval ship Nistar, commanded by Commander Amit Subro Banerjee. She's an indigenously built diving support vessel. Her operational prowess has enhanced the submarine rescue capabilities not only for the Indian Navy but for the larger Indo-Pacific. यह युद्धपोत कुशल सैचुरेशन डाइवर्स और विशेषज्ञों द्वारा संचालित गहरे समुद्र में रिकवरी, पानी के भीतर रखरखाव और मानवीय क्षमताओं को बढ़ाता है। With that, ladies and gentlemen, we come to the end of the second leg of the review covering the third and fourth columns of anchored ships. Before the President of India reviews the fifth and sixth columns, we shall now witness an aerial display of activities. देवियों और सज्जनों, हम समीक्षा के दूसरे चरण के अंत तक पहुंचते हैं, जिसमें एंकर डाले जहाजों के तीसरे और चौथे कॉलम का निरीक्षण शामिल है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पांचवें और छठे कॉलम की समीक्षा से पहले अब हम हवाई गतिविधियों का प्रदर्शन देखेंगे। Two indigenous advanced light helicopters will now perform search and rescue. You will shortly see free divers descending into the water to rescue personnel in distress. This operation requires considerable practice and skill. Maintaining the proper altitude above water is essential. Otherwise, rotor wash generated by the rotors can be dangerous to the diver and the helicopter. समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमता है, क्योंकि समुद्र में ऑपरेट करते समय सबसे बड़ी चुनौती अक्सर समुद्र स्वयं ही होता है। अभी हमारे सामने समुद्र शांत है क्योंकि मॉनसून हाल ही में पीछे हटा है, पर सामान्यतः सी रफ रहते हैं और शिप को रोलिंग और पिचिंग का सामना करना पड़ता है। इसलिए कठिन सी स्टेट्स में अनुभव की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में यह सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आवश्यक होते हैं। किसी भी दुर्घटना या समुद्र में गिरे हुए व्यक्ति की तुरंत सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। और ये बुनियादी क्षमता केवल हमारी युद्धपोतों के लिए ही नहीं, बल्कि मर्चेंट शिप्स और छोटी बोट्स, मछुआरों इत्यादि के लिए भी काम आती हैं। We shall now witness a simulation of rescue operations by Dhruv helicopters. Here, the helicopters fly at low altitudes at a speed of 10 knots and dispatches free divers to rescue survivors in water. This method is typically employed when more than one survivor is in water, such as in case of a boat capsize. The idea is to support as many non-swimmers as possible and get them to safety. देवियों और सज्जनों, हेलीकॉप्टर्स कम ऊंचाई पर 10 नॉट्स की गति से उड़ेंगे और पानी में जीवित बचे लोगों को बचाने के लिए गोताखोरों को उतारेंगे। यह तरीका आमतौर पर तब अपनाया जाता है जब एक से अधिक लोग पानी में जीवित बचे हों, जैसे कि नाव पलटने की स्थिति में। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक उन लोगों को सहायता प्रदान करना है जिन्हें तैरना नहीं आता, और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। Ladies and gentlemen, you just witnessed the divers being winched up to the helicopter, depicting the successful rescue of the survivors from the sea.
In a short while, ladies and gentlemen, the President of India will review the 5th and 6th columns of anchored vessels. This would be our third leg, and we shall now witness some of the larger vessels that are participating in this historic review today. देवियों और सज्जनों, कुछ ही क्षणों में भारत के राष्ट्रपति 5वें और 6ठे कॉलम की समीक्षा करेंगे। यह हमारी तीसरी कड़ी होगी और आज हम इस ऐतिहासिक समीक्षा में भाग लेने वाले कुछ बड़े युद्धपोतों को देखेंगे। This column also comprises the gallant warships of the carrier battle group that dominated the northern Arabian Sea during Op Sindoor. देवियों और सज्जनों, अब आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम और शौर्य का लोहा मनवाने वाले कैरियर बैटल ग्रुप के जहाज। आखिर कैरियर बैटल ग्रुप क्या है? कैरियर बैटल ग्रुप एक व्यापक सामुद्रिक क्षमता है जो युद्धपोत, फिक्स्ड विंग और हेलीकॉप्टर के साथ साथ तट से आए हुए सर्विलियंस एयरक्राफ्ट और नेटवर्क डेटा से संगठित होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर इस क्षमता का केंद्र है। इस बैटल ग्रुप के अन्य शक्ति स्रोत हैं आपके सामने तैनात बलशाली डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स, उन पर एम्बार्क्ड हेलीकॉप्टर्स और खुद कैरियर के ऊपर के लड़ाकू विमान। कैरियर बैटल ग्रुप एक ऑफेंसिव एंटिटी के रूप में न सिर्फ इंडिया की फॉर्मिडेबल फायर पावर का सिंबल है, बल्कि एक शील्ड ऑफ एश्योरेंस भी है जो हमारे हितों की रक्षा और सुरक्षा हर डायमेंशन के नेवल वॉरफेयर में करने में सक्षम है। Ladies and gentlemen, look right ahead. On either side of the column, you can witness the mighty destroyers and frigates that comprise the carrier battle group. Pennant number Foxtrot 48 on left-hand side is Indian naval ship Satpura, commanded by Captain Rajiv K. Tiwari. She carries a mix of anti-ship, land attack, anti-air and anti-submarine weapons, enabling her to perform a wide range of missions. She's also capable of carrying multi-role helicopters. इस कॉलम के सबसे अग्रिम युद्धपोत सतपुड़ा का युद्ध घोष है। सबसे आगे कौन खड़ा? सतपुड़ा, सतपुड़ा। यह जहाज भारतीय थल सेना की आर्मर्ड रेजिमेंट के सिंध हॉर्स से संबंधित है। What you see next to your left is another Shivalik class frigate with pennant number Foxtrot 49, Indian naval ship Sayadri. She is commanded by Captain Vikas Jha. महाराष्ट्र की पर्वत श्रेणी सह्याद्री के नाम से प्रेरित यह जहाज भारतीय थल सेना की द पूना हॉर्स रेजिमेंट से संबंधित है। हाल ही में इस जहाज ने भारतीय नौसेना और पूर्वी बेड़े का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय नौसेना और कोरियन नौसेना के पहले बायलेटरल अभ्यास में भाग लिया। In the year gone by, the ship has been at the forefront of multifaceted deployments of the Indian Navy, ranging from Operation Sindoor on the western seaboard to operational deployments in the South China Sea and Western Pacific.
An unmissable sight is coming up on your right. Indian naval ship Vikrant, the made in India, made for India aircraft carrier, commanded by Captain Ashok Koteshwara Rao, Nausena Medal. Today, INS Vikrant is also the flagship of Admiral Dinesh K. Tripathi, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Nausena Medal, the Chief of the Naval Staff. Coming up for review next is Indian naval ship Ranvijay, pennant number Delta 55 on your left-hand side. She's commanded by Captain Prajit Menon. The next ship on your right is Indian naval ship Vishakhapatnam, the first ship of the latest Project 15 Bravo destroyers, commanded by Captain Pradeep Raman. She is the flagship of Vice Admiral Krishna Swaminathan, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal, the flag officer commanding-in-chief, Western Naval Command. On your left-hand side next is Indian naval ship Ranveer, pennant number Delta 54. She's commanded by Captain Rahul Mehta. देवियों और सज्जनों, रणवीर के नौसैनिकों का उत्साह और जज्बा देखते ही बनता है, जो अपनी सेवा के प्रति गर्व से सीना चौड़ा कर अपने जहाजों पर तैनात हैं। The third of the Project 15 Alpha destroyers coming up on your right is Indian naval ship Chennai, commanded by Captain Suraj James Ribera, Nausena Medal. She is the flagship of Vice Admiral Ajay Kochar, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Nausena Medal, the Commander-in-Chief of Andaman and Nicobar Command. Next on this leg on your left-hand side with pennant number Foxtrot 71 is the guided missile frigate Indian naval ship Tamal, commanded by Captain Sridhar Tata. तमाल का वॉर क्राई है, जीत हमेशा हर बार हर हाल, जय तमाल जय तमाल। The lead ship of the new Giri class of stealth frigates, Indian naval ship Nilgiri, is coming up next on your right. She is commanded by Captain Gurudeep Bala and is the flagship of Vice Admiral Sanjay Bhalla, Ati Vishisht Seva Medal, Nausena Medal, the flag officer commanding-in-chief, Eastern Naval Command, under whose supervision this grand review is being conducted.